Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are all fine. This is revision lecture number 1 for level 4 and the unit name is the human body. We are revising the different topics of the unit that are cell, tissue, organ system, types of muscles, keeping bones strong, exercise questions. Students, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए हम स्टेप वाइज चलेंगे. वी एंड द अदर लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल बॉडीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड. दे आर मेड बाय सेल्स, बट द क्वेश्चन इज व्हाट आर सेल्स? Cells are like bricks of the wall. The living things are made of cells. There are different types of cells. They perform different functions and their shapes are also different. For example, bone cells, muscle cells, blood cells, etc. We are multicellular. Students, जब कुछ सेल मिलकर एक खास काम करते हैं तो उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं. जैसे सेल्स की टाइप्स हैं वैसे टिश्यूज की भी टाइप्स हैं, like the muscular tissue, connective tissue, nervous tissue, etc. Different tissues perform different functions in the body. Now come to the organ, how an organ develops. When the group of tissues work together, they form an organ. Means जब group of tissue मिलके काम करते हैं तो एक organ बनता है जो कि कोई खास function perform करता है. Heart is an organ whose tissues are specialized to pump blood to all body parts. Brain, lungs, kidneys, stomach, etc. They are all different organs of our body. Students, when the group of organs work together, they form organ system. For example, an organism's body comprises of many systems. Well, students, this slide shows the development of digestive system from the cell. Muscle cells group together to form smooth muscle tissue. Smooth muscle tissues group to form stomach. Stomach and some other organs like mouth, esophagus, small intestine, large intestine arranged to form digestive system. The skeletal system is an important system of the body. The functions of skeletal system are: it gives strength and support to the body. It frames the shape of the body. It moves the body. It protects soft internal organs like ribs protect heart and lungs. Skull protects the brain, etc. The skeletal system comprises of bones, joints and tissues. Joints हमारी बॉडी में ऐसी जगह हैं जहाँ दो बोन्स आपस में मिलती हैं. इन बोन्स को मिलाने वाला टिश्यू लिगामेंट कहलाता है. जॉइंट्स दो तरह के हैं, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉडी में हिंज जॉइंट जहाँ भी मौजूद है वहाँ मूवमेंट सिर्फ एक डायरेक्शन में ही होती है. फॉर एग्जाम्पल, जॉइंट्स इन एल्बो एंड नी. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउज द मूवमेंट इन सर्कुलर डायरेक्शन, मीन्स इन ऑल डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, जॉइंट्स इन हिप एंड शोल्डर. ऐसा टिश्यू जो मसल्स को बोन से जोड़े उसे हम टेंडन कहते हैं. Well, students, the muscular system consists of muscles and tendons. Muscles are of 3 types: smooth muscles, cardiac muscles and skeletal muscles. हमारी बॉडी के hollow organs smooth muscle से बनते हैं. Stomach, bladder and intestines are made by smooth muscles. Smooth muscles are also called as involuntary muscles. ऐसे मसल्स जो कि अपना काम ऑटोमेटिकली करते रहें और हमारी विश पे डिपेंड ना करें उन्हें इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं. कार्डिक मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनवॉलंटरी मसल्स. हार्ट इज मेड बाय कार्डिक मसल्स एंड इट हैज द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. द थर्ड टाइप ऑफ मसल्स आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स. ये मसल्स बोन से अटैच होते हैं और मूवमेंट का काम करते हैं. ये वॉलंटरी मसल्स हैं और हमारी मर्जी से काम करते हैं.
इनकी एग्जाम्पल्स हैं बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। हर बॉडी पार्ट की मूवमेंट स्केलेटल मसल से ही होती है। Students, bone can break or fracture because of injury. Bones can bend or break easily in older people, so we should take calcium-rich foods in order to keep the bones safe and strong. Calcium-rich foods are milk, cheese, yogurt, etc. स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी रिव्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन? आंसर: मेन फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन आर इट हेल्प्स टू गिव स्ट्रेंथ टू द बॉडी, इट सपोर्ट्स द बॉडी, इट हेल्प्स टू मूव द बॉडी, इट हेल्प्स टू फ्रेम द शेप ऑफ आवर बॉडी, इट प्रोटेक्ट्स सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स लाइक लंग्स, हार्ट एंड ब्रेन. Question number 2. How many types of muscles are there? Describe each of them with an example. Answer: there are 3 types of muscles. Number 1. Smooth muscles. Smooth muscles make up the internal hollow organs of the body. They are involuntary muscles. For example, muscles of stomach, intestine, etc. Number 2. Cardiac muscles. The muscles which make up the heart are called cardiac muscles. They are involuntary muscles. For example, muscles of heart. Number 3. Skeletal muscles. Skeletal muscles are joined with the bones with the help of tendons. They are voluntary muscles. For example, biceps, triceps. Question number 3. Suggest any 2 ways to take good care of muscles and bones. Answer: we can take good care of our muscles and bones by doing plenty of exercise, eating right kinds of foods. Label the diagram. This diagram is given on page number 4 and there are 4 labels for this diagram. They are cell, tissue, stomach and digestive system. Objective questions. Choose the correct answer. Number 1. Which kind of tissue gives shapes to the organs and holds them in place? There are 4 options: connective, epithelial, muscular or cardiac. Connective is the correct answer. Number 2. Cardiac muscles make up which organ? Lungs, heart, eyes or liver? Heart is the correct answer. Number 3 statement. What are the muscles that perform their jobs without you even thinking about them called? Voluntary muscles, biceps, involuntary muscles, skeletal muscles. Involuntary muscles is the right answer. Number 4. What makes our bones strong? Exercise, calcium-rich foods, milk, all of them. All of them is a correct option. Number 5. The smallest bone of the body is in the eye, heart, nose or ear. Ear is a correct option. Fill in the blanks. Number 1. Bone is an example of a dash. Answer is tissue. Number 2. Dash muscles contract and relax when pumping blood around the body. The answer is cardiac muscles. Number 3. The place in a vertebrate's body where 2 or more bones meet is a dash. The answer is joint. Number 4. The tissue that joins 2 bones together is known as dash. The answer is ligament. Number 5. The joint which moves a part of our body in one direction only is known as dash joint. The answer is hinge joint. Number 6. The joint that can move a part of our body in a circular direction is known as dash joint. Answer is ball and socket joint. Number 7. The stomach is an example of dash muscles. The answer is smooth muscles. Number 8. The muscular system works with the dash system to help you move. The answer is skeletal system. Number 9. Dash muscles make up the internal hollow organs in the body. The answer is smooth muscles. Match the definition in column A with the correct term in column B.
कॉलम ए की स्टेटमेंट को हम कॉलम बी की टर्म्स के साथ मैच करेंगे। नंबर 1, अ टिश्यू दैट होल्ड्स 2 और मोर बोन्स टुगेदर एट अ मूवेबल जॉइंट, इसका आंसर है लिगामेंट, इसको हम लिगामेंट से मैच करेंगे। नंबर 2, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन अ बॉडी, इसका आंसर है स्केलेटन, इसको हम स्केलेटन से मैच करेंगे। नंबर 3, अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, इसका आंसर है ऑर्गन, इसको हम ऑर्गन से मैच करेंगे। नंबर 4, अ थिक शीट ऑफ टिश्यूज दैट अटैच्ड अ मसल टू अ बोन, इसका आंसर है टेंडन, इसको हम टेंडन से मैच करेंगे। एंड द लास्ट इज द बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, इसका आंसर है सेल और हम इसको सेल से मैच करेंगे। Students, this is the end of revision lecture 1. Hope you are able to attempt the questionnaire. Thank you.